on the occasion or under the umbrella of Azadi Ka Amrit Mahotsav, recognized him as the cultural ambassador of India. He successfully runs his progressive Indian restaurant called Namak in Abu Dhabi, which has received the Best Restaurant Award in the first year of inception by Time Out Abu Dhabi and What On Abu Dhabi. His cookbooks include A Chef in Every Home and Kunal in the Kitchen, both of which are a complete family cookbook. He's actively involved in training unprivileged and unemployed youth in cooking and raising funds to make their own sustained food business together with the United Ways of Delhi, which is a part of the which is a non-profit organization in the Indian and actually globally also. With this, I would like to thank Kunal for accepting our invite and come over, and please share a few words with us. Thank you. Thank you. Thank you. So, शुक्रिया, बहुत अच्छा बड़ा लंबा आपने इंट्रोडक्शन किया, बट शुक्रिया, अच्छा लगा सुबह सुबह अपने बारे में सुनकर। बट आई थिंक मेरा जन्म दिल्ली का है और छोटे होते ही खाने की अहमियत थी, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर पे 10-12 लोग, तो रसोई घर बहुत बड़ा होता था। और एक ऐसे वक्त पर जब आदमियों को देखते नहीं थे हम किचन के अंदर, वहीं पर उसी दौरान मैं किचन में ज़रूर होता था, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली में सारी जो मेरी बहनें हैं वो सारी बहनें थी, आई वाज द ओनली बॉय, तो उनके साथ खेलता नहीं था, तो आई यूज्ड टू एंड अप इन द किचन विद मम्मी। वो होता है ना, मम्मी का पल्लू पकड़ के छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल वैसे ही। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। तो एक लगाव रहा है फैमिली के साथ, खाने के साथ, मम्मी की हेल्प करना, टेबल रखना, या चलो करछी चला दी, चाय बना दी, और वहीं से मतलब कहीं ना कहीं एक रिलीफ था, एक प्रोटेक्शन थी कि भाई अगर आदमी भी रसोई घर में जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। और वो बाद में काफ़ी सालों बाद पता चला यार बड़ी डिमांड है, मतलब विमेन लाइक मैन इन द किचन। तो सबका यही सपना है जी, उनका हस्बैंड किचन में कुछ तो करे, तो वो बड़ा फायदा हुआ मुझे। एंड छोटे होते ही ना मेरे फादर के साथ, जैसे हम नॉनवेज, मदर तो हाथ भी नहीं लगाती, तो जिस दिन नॉनवेज बनता था तो फादर के साथ जाते थे हम लोग, मीट लेना है या मच्छी लेनी है या कुछ भी नॉनवेज लेना है घर पे पकाना, तो फादर ही बनाते थे, तो उनसे भी मैंने सीखा। लेकिन जो एक बहुत ही यूनिक चीज़, या शुरुआत में बड़ा डर लगता था, वो था मच्छी को देखकर कि भाई इसको कैसे बनाएं। तो टिपिकल पंजाबी फैमिली तो उनके लिए मटन और चिकन ही होता था, तो एक ही चीज़ आती थी, फ्राइड फिश। बट जैसे जैसे कॉलेज में गए, खाने को नए तौर तरीके से सीखा, तो पता चला एक पूरी दुनिया है फिशरीज की, मछलियों की, और अलग अलग हिंदुस्तान में प्रजाति है, अलग अलग तरीके की प्रेपरेशंस हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, मछली हमारे कल्चर के साथ बहुत तरीके से, एक बड़े मज़ेदार तरीके से जुड़ी हुई है। जहाँ पर जैसे एक टिपिकल बंगाली वेडिंग है, तो उसके अंदर जो लड़के वाले हैं वो स्वीट्स और गिफ्ट्स देते हैं लड़की वालों को, साथ में एक रोहू मछली, उसको एक साड़ी पहनाकर सिंदूर और पान का पत्ता और हल्दी के साथ दिया जाता है बतौर, और वो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी मच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की वालों की तरफ, लड़की वालों को जा रही है। और वो इसलिए देते हैं क्योंकि मछली सिग्निफाई करती है प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक। और अगर आप लखनऊ जाते हैं, वहाँ के आर्ट के अंदर ही मछली है, हर दरवाजे पर, हर घर के आगे ट्विन फिश होती है, 2 मछलियाँ बनी होती है, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि मछली प्रॉस्पेरिटी देती है, गुड लक देती है। और जब मछली अंडे या बच्चे देती है ना, 1, 2, 3, 4 नहीं, हजारों में देती है, तो एक मान्यता है कि वो प्रॉस्पेरिटी हमारे घर भी आए। सो फिश या सी फूड अलग अलग तरीकों से हमारे खाने के साथ जुड़ा है। और आई थिंक आज की जो एक किताब है वो बड़ी मज़ेदार है, मैंने उसका PDF वर्जन पढ़ा था, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स मुझे इस किताब की लगी कि हर रेसिपी के साथ मछली का नाम है। होता है क्या, आप इंटरनेट पे जाएंगे ना, जितने भी हम शेफ्स या लोग जो रेसिपी डालते हैं, जैसे तंदूरी फिश, तो वो लिख देते फिश, भाई कौन सी फिश, वो नहीं लिखा होता। वो जानकारी फिश के बारे में बहुत अभी भी कम है। तो ये किताब ना सिर्फ आपको जानकारी देती है कि कौन सी फिश किस रेसिपी के लिए अच्छी है, ना सिर्फ आपको ये
अलग अलग तरीके की रेसिपीज बनाना सिखाती है कि आप बोर ना हो बार बार फिश खा के, बट आपको अलग अलग जगहों से भी अवगत कराती है कि भाई इस जगह पर इस महीने में ये फिश आपको खानी चाहिए। तो लिटरली आप एक ना फिश कैलेंडर बना सकते हैं अपना कि यार जनवरी के महीने में मुझे ये खाना है क्योंकि ये फिश मिलती है, फरवरी में, मार्च में, बरसातों में थोड़ा कम होता है, कई रिलीजियस ओकेजन्स पे उनकी कंजम्पशन लो हो जाती है। तो कहाँ से वो आगे बढ़े और किस तरीके से उसे हम प्रिपेयर कर सके। सो आई थिंक वो सबसे खूबसूरत बात है इस किताब की, और इतनी मेहनत लगती है किताब बनाने में, मुझे मालूम है। बहुत आसान होता है कि पन्ने पलटना, लेकिन एक एक उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत मुश्किल का काम है। और जब ये नेशनल लेवल पर होती है तो मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे वो कुक करते हो ना करते हो, खाते हैं अगर हैं, उनके लिए भी इट्स सरप्राइज। सो और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे यहाँ पे न्यौता देने का, एंड मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा बन सका। आपने बात भी बड़ी खूबसूरत की, अच्छा लगा आपकी बात सुन के। कई नई बातें Thank you, sir. Thank you, Kunal. I think it's a privilege that I think you've given us an idea also. Because you've spoken about the calendar. I think it's a very good thing to have. And to just now coming to the main point of the gathering here, we would like to invite all of you to please unveil the book. This book has been made with a lot of love and care. As sir was saying that the person behind it is actually a Bengali, and so I think fish eating and understanding of fish comes from childhood and flows generation to generation. Unveiling के बाद And we've had a very interesting conversations while we were making and reviewing the book. It was a pleasure to research on different states on how and what kind of fish is eaten, how do they eat it, what are the spices, the mix and match of spices that's done for making and preparing and cleaning the fishes. We hope that you all enjoy the book as much we have while we prepared it, and put our heart and soul in it. I would request all the dignitaries to please unveil the book. Thank you. इसके बाद है साहब का बोलने का। तो बाद में कर देंगे जी, बाद में बोल देंगे, जो कह दिया हमने लिखा है इसमें, पहले ही तो प्रोग्राम में लिखा है इधर। पहले ये आइए। अरे भाई ओके May I please request Secretary Sir to please share a few words here. Honorable Cabinet Minister for in the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Honorable Minister of State Dr. Balianji, Honorable Minister of State Dr. Muruganji, today's guest of honor, Celebrity Chef Sri Kunal Kapoor, Joint Secretaries Sagar Mehra and Balaji, E&Y team led by Amit Bashyan, and all our officers and staff of Fisheries Department and invited guests. A very good morning to all of you. First of all, I would like to thank the immense efforts
put in by our PMC team, E&Y, and the officers of the department for putting together this book, this coffee table book, Fish and Seafood. On the occasion of this book contains 75 government recipes. On the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav to celebrate 75 years of independence, it is very apt that the collection talks about 75 recipes. It could have been more, could have been less. It has been made to tally with that, to resonate well with the festival, the Mahotsav we are currently carrying on. Just wanted to give a brief background as such behind this coffee table book, because governments are more or less concerned about policies and not about eating. So we have a big target of increasing fish production and consumption in the country from the current levels of about 15 million tons to 22 million tons. And this requires that the fish consumption has to increase a lot in coming years. That's number one. And number two, given the state of nutrition in the country, and fish being one of the best sources of animal protein and the essential minerals, it is very necessary that fish eating is promoted. Yes, fish eating is very, very common. I come from Odisha, where everybody eats fish, irrespective of the caste, communities and all. Only certain days a week we abstain from fish, because fish is probably the only animal protein available in such areas. If you see all the riverine areas of the country, all the coastal areas where fish is available in abundance, fish forms a very integral part of the diet. Rest of the country, because fish is a very highly perishable commodity, where it was not produced in the absence of cold chain in the past, fish was not consumed, because it is difficult to bring fish in eatable state to those areas. However, with the development of the cold chain and the logistics, it is possible to bring fish either in the chilled form or in the frozen form or in the processed form to all over the country. Today the fish is transported from Andhra Pradesh to the farthest corners of northeast. So, given the two priorities, one, to kickstart the rural economy with development of aquaculture and fisheries, and two, to improve the nutritional status of the country, we need to promote fish in a big way, and I hope this recipe book will go a long way in promoting that. 2-3 things I wanted to mention here. Normally, except the areas where fish is normally eaten, other areas the menu is fairly limited if it comes to fish. As Chef Kunal already told, nobody tells what fish it is. I just wanted to tell in this gathering that unlike the other sources of animal protein, the chicken and mutton, which is varieties are maybe about 4 to 5, and chicken, the birds, maybe the broiler chicken, the different kind of country chicken, and probably the turkeys, and the fish will be about in thousands. It runs in thousands. So there is a huge variety. In fact, a hotel chain in Gorakhpur, they told, because they get a lot of Japanese tourists there, they said, please give us at least 20-30 varieties of fish so that we can make. Otherwise, our choice menu is becoming very limited. So it will be a challenge for us, and we have to find out ways to popularize all the varieties of fish. Not only the few varieties of fish that comes and few forms in it is eaten. Especially in the northern India, the fish is mostly in the fish fingers and fish cutlets and fish sambrissuri is basically nothing but fish pakoras. There are a lot of other things. This book tries to give different forms of cooking that can come with fish,
extremely delicious. One more challenge we may probably try, maybe our special guest may work on that, which is that I went to Japan in 2001. There the fish can be from the very big size like salmon and tuna to very small ones also. That also comes in the diet. But in our country, except in the households, we don't see those small fish coming. In fact, our small fish is getting into the fish meal industry. It is a total waste of nutrition. In fact, the smaller fish, it's told, the scientist, nutrition is told, has more nutrition than the bigger fish because you eat the complete fish, you don't discard any part of it. So, on this occasion, when we are trying to tackle the problem of nutrition and promoting fish, maybe we have to develop a more recipe of the smaller fish, the oil sardines, the mackerels, many of which are today getting into fish meal industry. It's a tremendous waste of national resources and sources of nutrition. So this is one challenge I call upon all those present here to try to overcome. With this, I hope this recipe book will go a big way in promoting fish and help the department in achieving the objectives. I thank honorable ministers to have kindly consented to grace this occasion and release the book. Thank you very much. Thank you, sir. May I please request our Honorable Minister of States, Dr. L. Morgan, sir, to say a few words. Thank you. Hon'ble Hon'ble Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Parshottam Rupala ji, Honorable Minister of State, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. Sanjay Kumar Balyan ji, Secretary Sri Jidendranath Swain ji, today's our special guest, Chef Kunal Kapoor, and Joint Secretaries from the Department of Fisheries, Sri Balaji, Sri Sagar Mehra, E&Y partner Sri Amit Vatsayan and his team, friends from media, ladies and gentlemen, Namaste, Vanakkam to you all. Today, as a part of Azadi Ka Amrut Mahotsav, we are glad to release this 75 recipes in the fish food. It's a good initiative by the department and the E&Y partners that put effort to bring such nice recipe coffee table book. So it is an appreciable in this occasion. So I am very happy to share because I am from South, because I am from Madras, as an coastal. Kunal Chef also mentioned here. I saw that Alapula fish curry and Malappuram fish curry and Chennai Gramat fish curry, Vanjaram fish curry. So I remember that my when I were in my village, or we are used to cook the fish. So I remembering that I appreciate our chef too, because he is not focused one area. He focused entire country and entire country fish food habit of how the West Bengal people are taking, and Punjab people how, and South Kerala, Tamil Nadu, Andhra. So I appreciate the team E&Y. Friends, so we have a very long coast because of 8,000 kilometer long coastal line we are having as big source of the fish and mariculture and maritime fish production sources are there. So, but what
our people are per capita or how they are eating. So that is compare than other meat or poultry or egg. So the fish consumption is, I think, we have to focus. So this type of books will give more importance to people to have the fish, and fish is a natural animal protein, and it is an help to the malnutrition children or mothers, pregnant mothers. So the promotion of eating food, it's give per capita, and also it growth our economy also. Already we are leading our fish and prawn export towards the world level. Under Atmanirbhar, our Prime Minister's vision, PMMSY, is focusing to promote this fish field. So first time in the country, we invested in this field 32,000 crore for the infrastructure development, fish marketing, and for modernizing fishing harbors and cultivation of seaweed also. Seaweed also one type of we can eat. That is also nutrients are there, vitamins are there, amino acids are there. So that also our government is focusing this coffee table. I appreciate the team it's in a very fantastic book come forward to we can see in this all government offices and airport, and so it's very happy. Thank you very much, each and all. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. देखिए, जिसने जीवन में कभी फिश ना खाई हो उससे रेसिपी के बारे में बुलवाना, मैंने सोचा था मुर्गन जी को अपना समय दे दूँ। मुर्गन जी 5 मिनट एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा, शायद रूपाला जी भी बहुत कम बोल पाएंगे। बहुत शुभकामनाएं। शायद विभाग ने पहली बार ऐसा कोई रेसिपी, और इसमें हम पहली बार आए हैं, और आपका धन्यवाद। आप विशेष रूप से इसके लिए कपूर साहब हमारे बीच में आए हैं। आपने बहुत अच्छी बातें कही, और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे सस्ता प्रोटीन का सोर्स है देश में, एनिमल प्रोटीन का, और कंजप्शन भी बढ़ रही है। और इतनी सुंदर फ़ोटो है कि शायद मैं कभी पहले देखता तो सोच सकता था कि भाई, सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये चलेगा दोनों चल ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है। नमस्कार सभी को, मेरा राम राम। आज़ादी के 75वें वर्ष में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश। ऐसे अवसर पर हमारे फिशरीज विभाग के द्वारा जीभ को तिल मिला देने वाली रेसिपी को सूचीबद्ध करते हुए एक किताब के फॉर्म में प्रकाशित करने का, कॉफ़ी टेबल को प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करने के लिए मैं विभाग को, अपने अधिकारियों को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। इसी अवसर पर उपस्थित मेरे दोनों साथी मंत्री आदरणीय बालियान जी, मुर्गन जी, स्वैन जी, और ख़ास हमारे इस कार्यक्रम के लिए मेहमान के रूप में उपस्थित हमारे श्री कुणाल कपूर जी, मैं आपका स्वागत भी करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। और आपके बहुत ही सटीक संभाषण में कई चीज़ों से हमको भी माहितगार किया, और ये आपका भाषण जो है वो आगे चल के इस विषय को दिशा देने का काम कर सकता है। फ़िश के साथ रेसिपी का नाम के साथ फ़िश का नाम जोड़ना, उसकी उपलब्धता को टाइम टेबल में जोड़ना, ये सारी नई बातें हैं। और हमारे स्वयं जी कभी कभी
हमारी और डिबेट में बता करते थे कि फ़िश का प्रोडक्शन जैसे बढ़ रहा है और कभी कभी हमारा एक्सपोर्ट में कई बाधाएं आती हैं, तो दूसरी दिशा से जब हम देखते हैं तो दुनिया भारत को मार्केट मानती है, वो भी अपनी आबादी के लिए, क्योंकि हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं सभी चीज़ों में। तो क्यों ना हमें डोमेस्टिक कंज्यूम को बढ़ाना चाहिए। ये एक इनका बहुत अच्छा हल है हमारे प्रोडक्शन को और हमारे फ़िश फार्मर्स को उनके सही दाम दिलाने के लिए। एक रास्ता होता है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को हमें बढ़ाना चाहिए और उसी के लिए ये बहुत ही उत्तम प्रयास माना जाएगा कि इस प्रकार की रेसिपी का ये मैं मानता हूँ कि पहली बार है। इसमें मेरे दो विनम्र सुझाव है कि एक तो ये रेसिपी अब कहाँ कहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, इसको हम कहाँ कहाँ रखेंगे, उसके बारे में हमें सोचकर इस दिशा में प्रयास करना होगा, वरना ये शायद हमारे विभाग में और हमारे टेबलों पे रहने से उनका बेनिफिट नहीं होगा। सो कोई अच्छे रेस्टोरेंट में कहीं पे हो, अच्छी लाइब्रेरी में कैसे हो, किस जगह पे हो, उस पर सोच पर उसी दिशा में हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। और दूसरा मेरा एक मत है कि पिछले दिनों हुआ था यहाँ दिल्ली में मैंगो फेस्टिवल होता है, बहुत ही अच्छा सुरुचिपूर्ण फेस्टिवल बनता है, सब लोग उसमें आते हैं और एंजॉय करते हैं। इससे लोगों को पता चलता है कि कितनी वैरायटी की मैंगोज़ हमारे पास है, उनके टेस्ट क्या क्या है, उनके खाने की खूबियाँ क्या क्या है, वो और एक बहुत ही अच्छा इनसे प्रसार होता है। फूड फेस्टिवल भी हमारे यहाँ बहुत होते हैं। अभी पिछले साल एक फेस्टिवल में मेरा जाना हुआ था, उसका नाम था दिव्य फूड फेस्टिवल। उस ऑर्गेनिक से भी आगे बढ़ गए हैं। सो ऑर्गेनिक फूड की भी एक डिमांड बढ़ रही है। ऐसे जैसे अलग अलग फूड्स के फेस्टिवल बन रहे हैं, क्या हम समुद्र थाली ऐसा कोई नाम दे के इसमें हमारा भी कुछ पंजीकरण कर सकते हैं उसी दिशा में। ये गुजराती थाली है, साउथ इंडियन डिश है, ऐसे कई थालियाँ मशहूर हैं थाली के नाम से ही। तो इसी को समुद्र थाली करके कोई और भी अच्छा नाम हो सकता है करके, यदि इसका कोई ऐसा रूप बनाया जाए और उसी को भी हम प्रमोट करेंगे, आप इसी में ज़्यादा वो काम भी कर सकते हैं और इसी को प्रमोट भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करने से ये, और आपने जो बताया है कि ये छोटी फिश वाला जो है वो न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक सोर्स है और हम इसको वेस्ट कर रहे हैं, तो इसी को सभी को जोड़कर हम और इस प्रयास को आगे ले जाने का कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के इस अवसर पर हमारे विभाग की ओर से, फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से इस प्रकार की एक फिश सी फूड कलेक्शन भी, इसमें 75 रेसिपी का कलेक्शन आप लोगों ने अभी किया है, वो और भी अब दिशा दर्शन करते हुए और भी कलेक्शन आएंगे और भी चीज़ें आएगी, उसको आगे बढ़ाएं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, इस प्रयास को शुभकामनाएं देता हूं और हमारा घरेलू जो अपना उपभोक्ता है उसमें रुचि पैदा करने में ये माइलस्टोन बन सकता है। और मैं कपूर जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपने इसमें इतना सुरुचिपूर्ण विषय को रखा है और बातें रखी है। वो यदि हम रेस्टोरेंट की दुनिया में इसको प्रचलित करने के लिए कोई योजना बनाएंगे तो ज़रूर इसमें कोई बेनिफिट हमको मिलेगा और दुनिया के मार्केट में भी ये रेसिपी की वजह से भी उसका मार्केटिंग बढ़ सकता है। ये दोनों चीज़ों को साथ में जोड़ने का एक बहुत सुंदर प्रयास करने के लिए मैं सचिव महोदय और अपनी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं और फिर से आपको इस मौके पर हमारे बीच में आकर अपना बहुमूल्य जो ज्ञान आपने तपश्चर्या करके माता जी की पल्लू से जुड़कर अभी देश और दुनिया में नाम रखने वाले चेफ तक आपका जो कैरियर बना है, उन सारी चीज़ों को हमारे साथ शेयर करने से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई भी देता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। May I please request our Joint Secretary, then Krishi,
सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय मंत्री श्री रूपाला जी का धन्यवाद करूंगा। सर, मुझे कल पता चला कि आप गुजरात में हैं सर। आपका इतना बिजी शेड्यूल होते हुए आपने सर बुक लॉन्च में हमारी अगुवाई की, बुक लॉन्च किया और सर शुभकामनाएं दी। मुझे आशा है सर कि इस बुक के साथ फ़िश कंजम्पशन में वाकई में बढ़ोतरी होगी और न्यूट्रिशियस फूड देने के लिए इस बुक का सहयोग ज़रूर मिलेगा, पूरे देश में मिलेगा। और सर आपने जो मार्गदर्शन किया कि कैसे इस रेसिपी बुक की लोकप्रियता को आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाया जाए, हम सर उसका ज़रूर अनुसरण करेंगे और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही सर मैं डॉक्टर बाल्यान जी हमारे आदरणीय MOS का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। सर आपका बिज़ी शेड्यूल होते हुए भी आपके ऑफिस से कन्फर्मेशन मिला और जिस समय सर हम तैयार कर रहे थे बुक, आपके ऑफिस से सबसे पहले फॉरवर्ड आपके ऑफिस से मिला सर। उससे हमें लगा कि आपकी सपोर्ट हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी सर। धन्यवाद सर। साथ ही मैं डॉक्टर मुरुगन जी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, सर आपके आशीर्वाद भरे वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद सर। और आशा है सर कि बुक का रोल न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने में, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में, डोमेस्टिक फ़िश कंजम्पशन को बढ़ावा देने में ज़रूर सहायक होगी। धन्यवाद सर। और हमारे सचिव श्री जतिंद्रनाथ स्वयं जी, सर आपकी गाइडेंस, आपकी अगुवाई में बुक तैयार हुई। 2 बार सर मैंने आपको ड्राफ्ट दिखाया, आपकी गाइडेंस मिली। तो सर सभी के सहयोग से, E&Y के टीम के सहयोग से, आपकी गाइडेंस से, सभी के विचारों ने सर एक बुक की शेप ली। उसमें सर आपका विशेष योगदान रहा। धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के इस लॉन्च इवेंट में सर आपने हमें आशीर्वादित किया। धन्यवाद सर। और इसके बाद अब मैं शेफ़ कुणाल कपूर जी, उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे निमंत्रण को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और शिरकत की। कुणाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। उसके बाद मैं मेरे रिस्पेक्टेबल कलीग डॉक्टर बालाजी, आप आए, आपने शिरकत की। धन्यवाद। और इसके साथ अमित वात्स्यायन जी, आपकी टीम, और शायद नंदिता है नहीं जिसने इस बुक पर दिन रात मेहनत की और इसको पॉसिबल किया। कभी कभार लगता था कि शायद 15 अगस्त से पहले नहीं हो पाएगा, बट उसने रात दिन काम करके अमित जी की अगुवाई में इसको तैयार किया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी जो यहाँ उपस्थित हुए, और विशेष रूप से मीडिया का आभार, हमारी सोशल मीडिया का टीम का आभार जो आए और इस इवेंट को अच्छे से कवर किया और सब तक पहुंचाया। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। थैंक यू। रेडी टू रिव्यू इट सर। कितने जन का कुछ आ पाएंगे सर हमारा। स्ट्रीमिंग बंद कर। फेस्टिवल है ना।